Greetings to everyone. So we were discussing about the series of UPSC 2020 and we have already discussed two videos, and this is the next video from which we are going to start from 21 question, that is about the winter diesel. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विंटर डीजल के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला तो विंटर डीजल होता क्या है। विंटर डीजल वो डीजल होता है जिसमें हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड्स वाले एरिया में अपनी गाड़ी चला सकें। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हाई विस्कोसिटी की वजह से इसकी क्वालिटीज़ बता रहा है कि हाई विस्कोसिटी की वजह से ये आइडियल बन जाता है फ्यूल हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस फ्यूल कैन बी यूज्ड इवन एट -30 डिग्री सेल्सियस। सो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये -30 डिग्री पे इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हाई विस्कोसिटी पे ये चलेगा? नहीं, ये लो विस्कोसिटी पे चलेगा। लो विस्कोसिटी पे क्यों चलेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो आपका पेट्रोल होता है या जो भी डीजल होता है उसके अंदर होता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, ये पैराफिन वैक्स क्या करता है कि जो भी हाई टेम्परेचर्स लो टेम्परेचर्स होते हैं उसमें ये जम जाता है, ये जेल की तरह बन जाता है और ये फ़्लो नहीं करता है। तो जब ये जेल की तरह बन जाएगा, ये फ़्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसकी हाई विस्कोसिटी है। हमको किस तरीके का डीज़ल चाहिए? हमें लो विस्कोसिटी वाला डीज़ल चाहिए। तो जो विंटर डीज़ल होता है इसके अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है? इसके अंदर लो विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी हाई वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला इज़ रॉन्ग एंड सेकेंड वाला इज़ करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन below is the correctly match? First is Adaptation Fund, second is Global Environment Facility, and the third is Green Climate Fund. Okay, so Green Climate Fund, what is Green Climate Fund? Green Climate Fund was initiated, this was established in Cancun Summit 2010, so this is correct. And जो first two है वो आपस में क्रॉस लिंक्ड है। ओके, अडेप्टेशन फंड इज़ रिलेटेड टू कोयोटो प्रोटोकॉल एंड जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इट इज़ रिलेटेड टू रियो अर्थ समिट 1992। actually global environment facility, it was established in 1994 as a result of Rio Earth Summit in 1992, and Adaptation Fund was established in 2001 after the ratification of Kyoto Protocol. And the Green Climate Fund, it is correctly marked that it was a result of Cancun Summit 2010. ओके, सो इस हिसाब से हमारा सिर्फ 3 वाला सही हुआ, 3 वाला सही हुआ, दैट इज़ ओनली सी। ओके, so next is question number 23. Question number 23, it is telling about the mines and minerals, and they are asking that which of the following are located in the first schedules of mine and minerals. So we have in first schedule we have 3 parts. We have part A, part B and part C. So what we have in part A? In part A, we have this I think coal. Yes, in part A we have coal. In part B we have lithium, and in part C we have gold and asbestos. एक पूरी लिस्ट होती है, so you can go through and see the list that we have many elements. So gold, asbestos, coal and lithium, all these elements are present in the first schedule of mine and minerals. So the answer is 4, 1, 2, 3 and 4. The next is which of the following category of voters are allowed to avail posting facility? So let's check the options. Number 1 is the member of armed force. Yes, they are allowed. Government officers on poll duty, allowed. Convicted and under trial prisoners, absentee voters जो हैं, this is the new category
new category by designated by election commission. So these are the categories that are allowed. Convicted and under trial prisoners are not allowed. Rather, voters under preventive detention, those persons who are under preventive detention, they are allowed to vote. But the convicted and under trial prisoners, they have been taken their fundamental rights, so they are not allowed to vote. So the answer will be 3 is gone. If 3 is gone, this gone, second gone, and D gone. So the answer would be 1, 2 and 4. ओके एंड एब्सेंटी वोटर्स में कौन कौन आता है, कम्स अंडर इट. एब्सेंटी वोटर्स को रिसेंटली डिजिग्नेट किया गया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन्स आते हैं अबव 65 years of age, and those citizens who have tested positive in COVID-19, they can also vote through this postal voting facility. They can vote. So the next question is अबाउट द दामोदर रिवर. ठीक है, तो दामोदर रिवर राइज करती है पलामू हिल से इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द स्टेट ऑफ झारखंड. सो दिस इज ट्रू and that it lies in the Palamu hills of Chota Nagpur plateau. The next is the Damodar Valley, was established in 1948 और ये फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंट इंडिया का. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. अंडर दिस प्रोजेक्ट 4 dams was located, 4 dams were established. First was the Laya Dam, that was being made on the Baraka River. Next was the Konar Dam, that was again on Konar River. Third was Maithon Dam, which is on the confluence of Barakar and Damodar River, and the fourth is the Panchet Dam, which is on the Damodar River. ठीक है, so what happens, this Damodar River rises in the Palamu hill in the Chota Nagpur plateau, and it flows in Jharkhand as well as in West Bengal. After flowing from Jharkhand, it joins Hooghly in West Bengal and it continues flowing there. So we have 4 dams. The answer would be both 1 and 2. The next is question number 26. With reference to National Migrant Information System, consider the following statements. So the first is we are talking about NMIS, that is National Migrant Information System. This is an online dashboard which is prepared by NDMA. What is NDMA? NDMA is National Disaster Management Authority. So it is not prepared by Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship. So first goes wrong. So we are left with these 2 options. The next option says that it will maintain a central repository of migrant workers and facilitate the smooth movement of migrant workers. So this is true. The next one is true कि इसको मेंटेन किया जाएगा, इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो वो जिसके पास जा रहा है कितने लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है. इन केस अगर कोई जा रहा है तो उसका मोबाइल नंबर, एज और बहुत सारी उसकी डिटेल्स ले ली जाएंगी, और वो जहाँ से गया है वो गया कि नहीं वहाँ से, और जहाँ उसको पहुँचना था वो पहुँचा कि नहीं. सो इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाएगा सो दैट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हम लोग ट्रेस कर सकें. ओके, सो द आंसर वुड बी ओनली 2. The next is the doffing is not a desirable characteristic in the wheat plant. Recently in news, RH-T14 and RH-T18 are the 2 doffing genes in the wheat. So next, the second option is very much correct, that these are the 2 doffing genes. But the first option, it is saying that it is not the desirable characteristic. It is one of the desirable characteristics, because what happens that it is stronger, it gives stronger stalk, और जब हवा चलती है तो ये टूटता नहीं है. इसमें ये होता है कि टूटता नहीं है, प्लस अगर आपकी वीट भारी हो जाती है तो ये गिरता नहीं है. ठीक है, तो इसके ये नाटा है तो इसकी वीट भारी हो जाएगी तभी ये खड़ा ही रहेगा, ये गिरेगा नहीं. जबकि लंबे में क्या होता है कि वो गिरने लगता है और उसकी ग्रोथ हिंडर होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉफिंग. और इसमें क्या होता है, जो RH-T14 और RH-T18 है, ये क्या करते हैं, ये स्टबल बर्निंग को कम करने की कोशिश करते हैं. तो स्टबल बर्निंग क्या होती है कि वही जलाना जो होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. अब इसको कम कैसे करेंगे, जो
राइस रेसिड्यू होता है, राइस के बाद जो रेसिड्यू आता है तो उसको क्या होता है, उसको जलाते हैं तब भी स्टबल बर्निंग होती है। लेकिन जब RST 14 और RST 18 आप ग्रो करेंगे तो आपको वो चीज़ हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसी के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, तो इट विल स्टॉप स्टबल बर्निंग। नेक्स्ट इज़ अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ होता है, वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग होता है, गुजरात से लेके तमिलनाडु में। सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट इज़ द कस्तूरी रंगन कमेटी ने वेस्टर्न घाट्स को, पूरे वेस्टर्न घाट्स को बोला था इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज गाडगिल कमेटी ने बोला था 2011 में पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए, ठीक है। बट इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को माना नहीं गया था क्योंकि इसको बोला गया था कि ये ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड इट इज़ नॉट डेवलपमेंट फ्रेंडली। सो उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी आई थी जिन्होंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 37% पार्ट्स को हम ESA डिजिग्नेट करेंगे, सिर्फ 37% पार्ट्स को ESA डिजिग्नेट करेंगे, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग बैन होगी, थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं वो बैन होंगे, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरीके की रिकमेंडेशंस दी गई और फार्मर्स के लिए ये एक सही रिकमेंडेशन रही कि फार्मर्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड वाज करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर वुड बी बोथ। सेकंड वाज रॉन्ग, आई मीन फर्स्ट वन वाज करेक्ट, सो द आंसर would be one only. The next is consider the following statements. We have Limpia Dhura, Treaty of Sogoli and Kala Pani. So Kala Pani was recently in news because नेपाल ने अपना न्यू मैप रिलीज़ किया था जिसमें उसने बताया था कि जो लिम्पिया धूरा है, काला पानी है, काली रिवर इज़ ऑन द ट्राई जंक्शन, it is in the Nepal region. So this is actually not in the Nepal, it is in Uttarakhand district, Uttarakhand state, Pithoragarh district of Uttarakhand state, because river Kali in 1986 what Treaty of Sogoli says the flow of river Kali decides the boundary of India and Nepal. So flow of river Kali, this is Treaty of Sogoli in 1816. So this is correct. Second one is correct. Limpia Dhura is on the northeastern part. This is not in the northeastern part, it is in the northwestern part. And Kalapani region is a tri-junction, so this is also correct. First is not correct, so we are left with 2 and 3. Okay, so what does it mean? It means that suppose this is India, this portion is Nepal and this is China. Okay, so we have this area